Don't worry, I'm not posting this recording anywhere, so it's safe to turn your videos on. It's just for my you know मेरा अपना कुछ देखने के लिए कि कैसा गया सेशन, to improve. That's why I record. I'm not going to post it anywhere, so it's safe to turn your videos on. Okay, so ready everyone? So before starting, there are some rules which you will not break if you want to experience it fully. And number one rule is promise not to open your eyes until I say so. जब तक मैं नहीं बोलती आपको eyes open करने के लिए, sit in the upright position, comfortably बैठ जाएं आराम से, किसी भी बॉडी पार्ट पर कोई प्रेशर ना हो, बिल्कुल आराम से बैठ जाएं। और जो भी मैं बोलूँगी वो आपको रिपीट करना है। एंड ड्यूरिंग द सेशन आपको अगर कभी भी फील होता है कि मुझे रोना आ रहा है, मैं टीयर्स निकलेंगे, आंसू आएंगे, तो डोंट सप्रेस योर टीयर्स, डोंट सप्रेस योर इमोशंस, लेट इट फ्लो, क्योंकि जो क्राइंग है इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू रिलीज नेगेटिव एनर्जी, so that way your negative energy will be released. And before starting, quickly check everyone in your heart, how are you feeling right now? हैवी लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? पेट में हैवी लग रहा है या चोकी फीलिंग है कहीं यहाँ पर? क्विकली चेक नाउ एंड विल चेक दैट आफ्टर द सेशन. कहीं पर पेन है, स्ट्रेस फील हो रहा है, हेड में हेडेक हो रहा है, एनीथिंग, quickly check with it, check with yourself and drink some water. स्पेशली जो मेन हैं आज के सेशन में, जो बॉयज़ हैं, प्लीज़ डू नॉट सप्रेस योर इमोशंस. इफ़ यू वांट यू कैन सिट समवेयर जहाँ पर कोई रोते हुए ना देखे. And it's okay for boys also to cry. You all are human beings, and it is understandable if okay, increased heart rate. We all are human beings and we all are emotions. बस इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है जब, क्योंकि उसी के थ्रू आपका एनर्जी रिलीज होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Everyone tell me the volume of the music. Let it start properly now. So close your eyes. Everybody close your eyes. Sit comfortably. थोड़ा सा लो है मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है वॉल्यूम के साथ, इसमें म्यूजिक के साथ में? एंड इट्स बेस्ट इफ यू यूज ईयरफोन्स फॉर बेस्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि ये हीलिंग म्यूजिक है, हीलिंग फ्रीक्वेंसी है. इट विल हेल्प यू हील. So close your eyes everyone. Great. Now take a deep breath and exhale. Inhale from your mouth, nose, and exhale from your mouth. Inhale and exhale. Inhale again and exhale again. Now imagine a white light coming from the universe is entering your crown chakra, is entering your head. आपके सर में समा रही है सफ़ेद प्रकाश.
This is the divine light, healing divine light. If you choose to see it, it will work on your body. And it's entering your body as well as enveloping you around your body, creating a shell of powerful healing divine light. Now, nothing negative can enter this shell, and whatever negative is inside the shell has to go out. You are protected right now by the divine energy, and from each other's energy as well. हमारी आपस की एनर्जी भी एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगी इफ़ यू आर एबल टू क्रिएट दैट शेल अराउंड यू. इफ यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज इट, जस्ट बिलीव इट दैट इट इज देयर. नाउ रिपीट आफ्टर मी. आई एम सॉरी. You have to repeat loudly. Don't be shy. जो सुन रहा है उसको बाद में समझा देना कि आप क्या कर रहे थे. I am sorry. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Now take a deep breath. Inhale and exhale. Relax yourself. Put your hands on your heart. Put both of your hands on your heart. That's where you are. And that's where God is inside your body. So you connect to the source. Because it's only in the hands of the divine, in the hands of God, which can create this healing. And say, I choose to receive divine healing now. And I choose to release all of my negative emotions once and for all now. Now I want you to repeat, to imagine the face of your mother. Imagine her face. Imagine she is standing in front of you. वो आपके सामने खड़ी हैं. वो कैसे स्माइल करती हैं वो देखो. उनकी आईज को इमेजिन करो. And try to visualize that she is sitting in front of you. And if you are not able to realize that, just believe that she is there energetically. Now say mom या मम्मा या जो भी आप अपनी मदर को प्यार से कहते हैं. मम्मा, I take 100% responsibility to release all the negative emotions that were ever created between us, and I take 100% responsibility to heal them for both of us, because at the energy level we both are one. Everybody, you have to speak loudly. Dr. Mamta, Payal ji, Shiv Prakash ji, you have to speak loudly.
to make it work. It's important that you hear what you say. Everything has a scientific reason. ना अपने मम्मा का हाथ प्यार से अपने हाथ में लो और उनको बोलो. Say, this is your chance to say everything to your mom, and I am giving you that chance. बहुत प्यार से उन्हें बोलो, उनकी आईज में देखते हुए, मम्मा, I'm so sorry for hurting you. I'm so sorry for judging you so many times. I'm so sorry for not giving you enough time. I'm so sorry for not meeting your expectations. Please forgive me, Mama, for not understanding you many times. Please forgive me for not loving you enough. Everybody, hands on your heart. Payal ji. Please forgive me for not respecting you enough. Thank you so much, Mama, for all of your unconditional love that you showered upon me. Thank you so much for that. Thank you so much for loving me even when I hated myself. Thank you so much for all of the sacrifices that you made for me. Thank you so much for all of those times when you protected me from others. Thank you so much for all those sleepless nights that you had because of me. Thank you so much for nurturing me. Thank you so much for giving me all that you had, for giving me all of these things जो मैं कभी आपको नहीं दे पाई, and nobody else could have given me that than you did. Even though I did not tell you many times, Mama, but I tell you now that I love you, Mama. I'm not as good as you to show my love for you, to show my emotions for you. But believe me, I love you so much. And I am grateful for every single drop of love you gave me. Now hug your mother. Give all of your love that you are feeling right now for your mama. Now say that to her, Mama, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Now take a deep breath. Inhale and exhale. Let your emotions release through your eyes, from your heart.
Let it get released. Allow yourself to release all of these emotions right now. Now imagine the face of your father. And along with that, you can also imagine people who are married. You can imagine the face of your husband and the face of your wife. Okay, so you can combine, you can दोनों को एक साथ बुला सकते हैं आप. Invite them in your heart and try to visualize them, that they are there listening to you, what you have to say to them, what you haven't told them ever. जो कभी नहीं बोला वो आज बोल दो. And say to them, I take 100% responsibility to release all the negative emotions that were ever created between us. Because at the energy level, we all are one. And tell them, Papa, I'm so sorry for misunderstanding you. My dear husband, I'm so sorry. My dear wife, I'm so sorry for misunderstanding you so many times. And I'm also sorry for those times when you misunderstood me. I take your responsibility as well. I'm so sorry for judging you, for hurting you, for not believing you sometimes. I'm so sorry for doubting your love for me. Please forgive me, Papa, my dear husband, my dear wife, for thinking that you don't love me enough when you were not there for me, when you were working out. Now I understand that all you did was for me. 100% of it was for me. I now understand that. And I acknowledge how much you have done for me. Thank you so much for everything that you have done for me. Thank you so much for taking care of finances, my clothes. And then thank you so much for my education. Thank you so much for keeping food on my plate. Because of you, I never slept empty stomach. I never had to stay hungry because of you. And how huge is that? I could not understand it when I was a child. But now I understand it. And now I acknowledge it, and I thank you for that. For doing all of that you did for me. Papa, my dear husband, my dear wife, even though I haven't told you this many times, or maybe I never told you this, but I love you. I love you now even more when I understand all of those things. Being an adult, being a parent. So I thank you so much for being God's guardian for me.
You are truly an angel in my life that God has sent for me, for taking care of me. Thank you so much, and I love you so much. Now hug all of them. Now it's your turn to give your love back to them. If you want to say anything else to them, you can right now. Now is your time. Say it. It will reach them in the form of energy. It's the best you can do for them because you are sending them the positive energy. And you already know how beautifully it will impact them. Your love. Nothing is more powerful than love. Now take a deep breath. Inhale and exhale. Inhale again and exhale. Now imagine the face of the person who has hurt you the most till date. कोई एक पर्सन या दो पर्सन ऐसे ज़रूर होते हैं हमारी लाइफ में जिनसे हमें सबसे ज़्यादा चोट पहुंची होती है. Now it's time to release them from your heart. And it's time to forgive them. It's time to forgive yourself for what happened. Imagine that person is sitting in front of you. And you know what? Your mother, your father, your spouse are standing or sitting beside you right now, supporting you, giving you strength, being your positive energy. And they will always be with you, even if they are not physically present with you. Now say the name of that person loudly. I would say my name. So dear Sugandha, I'm so sorry for blaming everything on you alone. Now I understand that even I am responsible for that situation, because now I know that I attracted that situation and I attracted your bad out of you, because now I know how the law of attraction works. The negative energy was in me, because of which that bad thing, that ugly situation got attracted between us. So I now take responsibility, 100% responsibility to heal it on behalf of both of us or all of us, because at the energy level we all are one. Please forgive me for not taking responsibility for my part. Please forgive me for holding on to so much negativity. Please forgive me for not seeing the divinity in you, for thinking that all of the fault was yours. Hold the hand of that person in your hand and say, thank you for this lesson. Thank you for this experience.
that I needed that lesson to grow. All you were doing was assisting me in my soul growth, in my personality growth, and you were making me strong. Thank you so much for that. And now I choose to move on. I choose to set you free from now on. And I choose myself to set free. I choose to forgive you. And I choose to forgive myself more for not doing it earlier. I love you. I love you, dear Sugandha. Just forgive that person or those people. Forgive them. And forgive yourself too. And choose to see the fact that everybody is a child of God. And a child of God can only be divine. We all are learning here. We all don't know what will happen in the future. We all get scared. We all want to protect ourselves. We all want our best. So इसमें किसी की गलती नहीं थी. Just learn your lesson and move on. Close that chapter. And forgive. Just release all of those negative emotions from your body. Imagine getting them released in the form of white light from your body and going out of that energy shell that we created in the beginning. Visualization is also energy. And say again to that person, dear Sugandha, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Now see that person going away from you. If you want them to leave from your life, see that person is going far and far away from you. And that person disappears. His energy that was stuck in your system is now gone. And if you feel some parts of it again later in time, you know how to release it, just like we did right now. Now we'll complete the session with self-healing, because we are the one who needs most of the love, most of the healing. For us, we are here. So imagine yourself sitting in front of you. Let all the energies release. Allow yourself to release your feelings. Allow yourself to feel. Forgive yourself. And I'm sure you all know how you look when you smile. So the person you are sitting in front of you, smiling, and there is so much love in your eyes. Take her or his hand in your hand and say your name loudly. I am sorry, Sugandha. I am the one
Who underestimated you the most? I'm so sorry for not being there for you. I'm so sorry for not speaking up for you. I'm so sorry for not listening your voice. When you were crying inside, I kept suppressing your emotions. When you were worried inside, I never paid attention to you, to soothe you, to bring comfort to you. I overlooked you. I'm so sorry for that. But now I am here for you. Please forgive me for disconnecting from you. Please forgive me for leaving you alone. Now you can imagine all versions of you in all of your life where you were not there for you, where you did not speak up for you, where you felt alone, where you felt scared. You can invite all of your versions, all of those versions right now, of any age, at any situation. Just invite all of them together. And give your love and comfort to them now. Thank you, my dear soul, for this beautiful life. Thank you so much for this connection with the universe. And thank you so much for coming despite of so many mistakes that I did when I was not there with you. You still came and you still believe in me and you still look up to me. Thank you so much for that. It doesn't matter who doesn't love you from now on. I love you. I love you all. All the love that I have, all the love in the universe, I am ready to give you from now on. Now hug yourself and give yourself a warm hug. Put your hands around your arms, around your shoulders, and rest your head on your shoulders. अपने सर को अपने कंधे पर टिका लें बहुत प्यार से, जैसे आप किसी को हग करते वक्त उनके कंधे पर सर टिकाते हैं, और बहुत प्यार से सहलाएं अपने आप को and say, I'm sorry for leaving you alone. Thank you for reconnection. I promise I will never leave you alone. And I will always speak up for you. I will always prioritize you. I will always take care of you. Because you are me. Give yourself all the love that you can. You need it. You really need it. Now, do you realize that you were waiting for your own love? All that you needed was your own love. Feel your love for yourself. If you want to say anything else to you, you can.
and say, promise yourself, I promise you that I will never leave you alone anymore. I'm here for you. I'm here for you. I'm here for you. Standing strong to love you and to protect you from everything in this world. Feel all of your love. Keep rubbing your shoulders, your arms. Keep loving yourself. Feel your love. Now very slowly move your body, move your hands, keep your eyes closed and rub your hands. Hands rub कीजिए. Generate the heat and put it all over your face, especially your eyes, your heart area, and kiss yourself. Kiss yourself. Now you can open your eyes very slowly. Do you promise now that you will not leave yourself alone anymore from now on? That जो सब कुछ आपने खुद से कहा आज, आप वो सब निभाओगे? Yes or no? Because what happens, जब हम अपने लिए खड़े नहीं होते ना, तो जो हमारा इनर सेल्फ होता है, जो हमारी इनर सेल्फ है, उसका ट्रस्ट हमारे ऊपर से उठ जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते. उसका डीप रीज़न यही होता है, एंड एक्चुअल रीज़न यही होता है बिकॉज हम अपने ही साथ खड़े नहीं होते, हम अपने ही लिए नहीं बोलते. सो कीप connecting with yourself and keep loving yourself, keep listening to yourself, keep fulfilling your desires, your wants, whatever you like, to build that trust with you. And slowly you will see that your internal state will start changing, and when your internal state will change, your external reality will start to change by law of attraction. Now quickly tell me, how are you feeling now? Give me one word in chat window, or you can unmute also if you want. Yes, anyone can speak. Good, relaxed. प्रिया जी, आपको जो हार्ट बीट हो रही थी अभी, वो कैसी है? चेक विद योर सेल्फ. एवरीवन चेक विद योर सेल्फ. हाउ आर यू फीलिंग नाउ एंड टेल मी. एवरीवन, सबको बताना है. गुड, वेरी लाइट, बेटर, गुड. Good. If you are feeling light, it means that load of negative energy is gone. That energy is released. Thank you. You can unmute yourself and speak, Priya ji. Yeah, all these things we sometimes, miss. Just to forgive and forget. These are the two things which become really difficult in certain situations. Okay. So, But you yeah, will take we can. responsibility for you, for that Yes, situation, because you attracted that, no? correct, Right? So it's your correct, responsibility to release it, correct. right? Mm, And it becomes easy with practice. And absolutely. also, I will be conducting these
आज जो हमने बेसिकली किया है, दिस इज़ एडवांस्ड होपोनोपोनो, ऑल्सो कॉल्ड कॉन्वर्सेशनल होपोनोपोनो, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपनी फीलिंग्स के साथ चेक इन करके दैट हाउ वी आर फीलिंग बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशन, हम उसको एड्रेस करते हैं। तो जब हम उस पर्टिकुलर पार्ट पर स्ट्राइक करते हैं तो वो चीज़ निकल जाती है वहाँ से। आप समझ रहे हो? तो वो बहुत एक बेसिकली क्या होता है, एक तो होता है ना ऐसे ही अंधेरे में कुछ ढूंढना, और एक होता है लाइट ऑन करके ढूंढना। तो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि you connect with yourself. The more you connect with yourself, the more you will feel your feelings. And अभी ये जो आगे के हीलिंग सेशंस होने वाले हैं, ये उसका 10% भी नहीं था। So the way you are feeling right now, tell me, how did you feel that way? When was the last time when you when you felt that way? Very difficult to say, actually. Why? It was a long time. Yeah, it was a long time. It was a very long time. Good. So I mean, I don't even remember actually talking to myself, actually telling myself, yeah, there are good people around me. right, Not everybody is bad. right, Because probably the same thing happens, like the frequencies were so different. right. Hmm. So now what happens today was like we all of us people who were actually creating problems for me. Now when you keep, as you say that they're sitting in front of you and actually talking to them. Yes. So I believe that should change a lot. Yes, yes, because at the you are basically communicating with them at the energy level. Yes, The yes, the version of them sitting in front of you is their higher self actually. And that higher self knows everything. And that is a divine self. That is not bad. मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी दैट वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी ऑल आर क्रिएशंस ऑफ गॉड। एंड yes. गॉड की क्रिएशन, कोई भी क्रिएशन ऐसी हो ही नहीं सकती जो डिवाइन ना हो। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लो, एवरी सिंगल क्रिएशन इज इनक्रेडिबल एंड डिवाइन, राइट? So it was a lovely session. Thank you so much. थैंक यू सो मच। एंड जस्ट टेल मी द वे यू फेल टूडे, डू यू वॉन्ट टू फील दैट मोर इन अपकमिंग डेज? Yes, yes. Actually, way to sleep normally. या चेक टुमारो कि आज नींद कैसी आई आपको। Hmm. ठीक है, आई एम श्योर इट वुड गेट बेटर फ्रॉम नाउ ऑन, राइट? सो सिंस so many negative emotions are stored in our body, and so हमें पता भी नहीं कौन से हैं। समटाइम्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, समटाइम्स आइडेंटिफाई नहीं भी कर पाते। बट आइडेंटिफाई करने की, जिसको नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं उसके ज़्यादा पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विद दिस हीलिंग वो अपने आप ही रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ज़्यादा लॉजिक में नहीं जाना है, सिर्फ अपनी फीलिंग्स फील करनी है एंड वी हैव टू हील। एंड इवन इफ सम डेज आप कुछ भी फील नहीं कर रहे हो, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो सम डेज वी फील वेरी एनर्जेटिक आफ्टर आवर प्रेयर, एंड सम डेज वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, बट इट डजेंट मीन कि वो वर्क नहीं कर रही है, राइट? सो किसी भी दिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे आज कल से थोड़ा सा कम अच्छा लगा है, तो उससे डिमोरलाइज नहीं होना है और नेक्स्ट सेशन में गायब नहीं होना है। ठीक है, तो बिकॉज इट हैपेंड इन माई प्रीवियस सेशंस कि अच्छा आज मुझे उतना खास नहीं लगा कुछ, तो मैं कल ज्वाइन नहीं करती हूँ। नो, प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक, बिकॉज एवरी सिंगल डे हीलिंग इज हैपनिंग, राइट? सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स फॉर 21 days, consecutive 21 days, we'll be healing, and we'll be healing through this advanced Ho'oponopono technique. And I encourage all of you to join every day, because एक भी दिन मिस नहीं करना है। एंड लेट मी टेल यू वन वेरी ब्यूटीफुल थिंग, जब आप कल से या आज से इनफैक्ट आपको क्या स्टार्ट करना है, ये जो सिंपल होपोनोपोनो प्रेयर है, 4 स्टेटमेंट्स हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इसको आपको, ये 1 राउंड है बेसिकली, ठीक है, ये 1 पैकेट है, तो ऐसे ऐसे 108 पैकेट्स आपको चैंट करने हैं। ठीक है, जैसे हम 8-9 मिनट में हो जाता है। एंड फॉर योर हेल्प आई हैव मेड अ वीडियो विच इज़ ऑन यूट्यूब, लेट मी गिव यू द लिंक ऑफ दैट। पूरे 108 हैं, उसकी हेल्प से आप, एक सेकेंड, मेरा शेयर तो नहीं है इसमें, ओके,
just give me, okay, give me the link. ओके, मैं एक काम करती हूँ, अभी यहाँ देने के बजाय मैं ग्रुप में लिंक पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से लीजिए, उसके साथ में कीजिए, बिकॉज जैसे मैंने आज एक म्यूज़िक प्ले किया हुआ था, उसमें भी एक हीलिंग फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्स हीलिंग फ्रीक्वेंसी प्ले की हुई है मैंने इन द बैकग्राउंड, जो हमें असिस्ट करती है टू रिलीज द नेगेटिव थिंग्स फास्टर। ठीक है, तो क्या करना है, 10 हार्डली 8-9 मिनट का है वो वीडियो, उसको ईयरफोन्स लगाने हैं, और उसके साथ साथ में मैं जैसे बोल रही हूँ अलॉन्ग विद माई वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसके साथ में ही आपको रिपीट करना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, वो पूरा 108 काउंट का है। अगर आपको कभी ऐसा होता है कि नेटवर्क नहीं है, फ़ोन में बैटरी नहीं है, तो आपको स्किप नहीं करना है। व्हाट यू कैन डू, जो हम पूजा करते हैं वो 108 बीड्स की माला आती है ना, उसमें से एक एक बीड पे आपको एक एक साइकिल, उसका एक एक पैकेट ऑफ बंडल जो है वो कंप्लीट करना है, तो वो पूरा 108 राउंड हो जाएगा। ठीक है, अगर जिस स्पीड से वीडियो में मैंने किया है उस स्पीड से आप करोगे तो 7-8 मिनट्स में पूरा कंप्लीट हो जाता है। सो स्टार्ट डूइंग दैट आफ्टर वेकिंग अप एंड बिफोर स्लीपिंग एवरी डे, और कभी मिस भी हो जाता है सुबह का या शाम का, तो जब आपके पास टाइम मिले तब आप कर लो। ठीक है, सेकेंड थिंग, अगर आपको कभी भी ओवर थिंकिंग माइंड में आ रही है ना, तो दिस इज़ अ वेरी बहुत अच्छा टूल है ओवर थिंकिंग को हटाने के लिए। आप किचन में काम कर रहे हो, आप नहा रहे हो, स्पेशली मैंने नोटिस किया है कि किचन में काम करते हुए और नहाते हुए बहुत सारी चीज़ें चलती हैं माइंड में, राइट, क्योंकि उस टाइम हमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है ब्रेन के पास करने के लिए, तो वो ब्रेन खाली नहीं बैठना चाहता, वो ऊट पटांग चीज़ें सोचता है। तो उस टाइम पर आपको यही चैंट करना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, मन में करो, आप करके मुझे कल खुद आके बताओ कि क्या फ़र्क पड़ा आपकी ओवर थिंकिंग पर। ठीक है, सो डू दैट एंड डू जॉइन सेशंस फ्रॉम टुमारो, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हीलिंग मैं थोड़ा सा मेडिटेशन और भी करवाऊंगी, एंड बेसिकली आई हैव अ लॉट टू गिव, एंड आप बस रिसीव करने वाले बनो। तो बिकॉज मेरी तरफ से नहीं आ रहा है, आप परमपिता परमेश्वर की तरफ से रहा है, आपके लिए आ रहा है, दैट्स वाई आपके पास चीज़ें पहुंची हैं। सो जब कुछ ब्लेसिंग आ रही है तो आप रिसीव करो, ओपन हार्टेडली रिसीव करो उसको। ठीक है, टू ऑनर हिम एज वेल, आप जिन्हें भी मानते हैं, आप माता को मानते हैं, भाई गुरु जी को मानते हैं, किसी को भी, मैं उस गॉड की बात कर रही हूँ, वन गॉड की बात कर रही हूँ, उनको प्लीज़ ऑनर करो, बिकॉज उन्होंने ये ब्लेसिंग आपके पास भेजी है। सो जस्ट ऑनर इट एंड अटेंड दीज सेशंस एवरी डे, एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ 21st डे हम कुछ ना कुछ बिग ब्रेक थ्रू ज़रूर क्रैक करेंगे। ठीक है, एनी वन एल्स, Thank you. किसी को, थैंक यू सो मच, कोई कुछ पूछना चाहता है या कोई कुछ शेयर करना चाहता है, एनी वन एल्स? पुनीत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगा आपको? Yes, it was a wonderful session. थैंक यू सो मच, I'm कैन यू feeling प्लीज very टर्न योर कैमरा ऑन? actually मैं बेड पे ही बैठा हूँ इट्स ओके चलिए, कोई बात तो नहीं, हाँ हाँ जी बताइए जी। so anyway so I'm actually in गुड़गांव in a hotel तो ओके, मैंने 9:15 एकदम मेरे को ध्यान में आया, मैंने एकदम से फिर ऑन कर लिया। अच्छा तो the best part was like you made me cry today वंडरफुल वंडरफुल, तो डेफिनेटली तो रिलीज हुआ है, एनर्जी बहुत रिलीज साल बाद ऐसा हुआ है। गुड तो यस सो आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स, बहुत लाइट फील कर रहा हूँ। बहुत गुड, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, तो थैंक यू सो एंड मच। एंड थैंक कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ ऑल्सो फॉर टेकिंग दिस स्टेप फॉर यू, क्योंकि हाँ इतना जी भी हाँ नहीं जी। करते हैं लोग, राइट? तो आप कर रहे हो, हम्म, ये बहुत बड़ी बात है। एंड आज से ना अपना हर एक छोटी छोटी विक्ट्री भी ना, छोटा छोटा स्टेप जो अपने लिए लेते हो, उसको एक्नॉलेज और सेलिब्रेट किया करो। एंड बहुत सारी सेल्फ लव की चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी, आप मतलब कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने वाले हो बाय द एंड ऑफ 21st डे। Okay, थैंक यू। so keep joining, keep attending the sessions, and also invite your loved ones to these sessions.
क्योंकि कल से मेन स्टार्ट हो जाएगा. विल बी फोकसिंग ऑन 4 एरियाज: हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर एंड मनी. ऑल चारों एरिया हम कवर कर लेंगे. पूरी लाइफ इसमें कवर हो जाती है, राइट? और कोई? शिव प्रकाश जी, भैया कुछ कहना चाहते हो आप? अनम्यूट कीजिए. हाँ, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ. अरे बात हाँ जी, हाँ जी, आ रही है. आप बढ़िया रहा आपका सीजन। अच्छा लगा? देख सुन अभी रहा था। कैसा फील बढ़िया कर रहे हैं अभी? बढ़िया है। आप कंफर्टेबल। कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? गुड. और कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं? नहीं नहीं, अभी तो ऐसा कुछ है, जो भी होगा बताएंगे। ठीक है, ठीक है, फिर कीप जॉइनिंग द सेशंस. ओके. ओके। ओके, थैंक यू. Okay, थैंक we are closing the session now. And is there somebody else that want to share or say something? No, thank you so much. It was really Okay, then. nice. Thank you so much, everyone, and see you tomorrow at 9 p.m. And I Yeah, won't take thank you. so much of time from tomorrow onwards. It's just an Yeah, introduction yeah. session. That's why it got stretched up. So I'm sorry for that. But Yeah, I'm it's sure okay. that it was fruitful. Yes, yes, it was Okay. definitely. Thank you so Thank you much, so much. really. Thank you. Good night. And post your feedbacks in the group so that other people also join from tomorrow. In the group, but then it is only for the admins to No, post the I have messages. opened the group. I opened the Okay, group at 8:30. It's still open for all of you okay, to say. So just go in the okay, group and give your feedback. How you felt, how was okay. that? Okay. Yeah, Thank you so thank you. much. Have Thank a you good so night. much. Yeah, you